ओम शांति। गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आप सभी का आज के इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष ये मीटिंग, जैसे स्वामी भाई ने आप सभी को जो नए हैं उनको ब्रीफ किया होगा कि एक नया प्रोजेक्ट जो बाबा का हॉलिस्टिक आईवीएफ आईयूआई प्रोजेक्ट है, जिसमें पहले से हम गर्भ संस्कार तो कर ही रहे थे, और ये एक स्टेप अहेड है, जैसे जिसको बीज संस्कार हम कह सकते हैं। तो बीज के ऊपर ही हम संस्कार करके स्ट्रॉन्ग पावरफुल बीज से जो आने वाला जो बेबी है वो बहुत वैल्यूएबल वैल्यूज से भरपूर होगा, फिजिकली मेंटली इमोशनली हेल्दी होगा। इस लक्ष्य से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और आदरणीय शिवानी दीदी ने इसको फरवरी में भोपाल में लॉन्च किया था। और वो तभी हमने फॉक्सी और ईसार जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट की, फॉक्सी और ईसार जो आईवीएफ कंसल्टेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, और तभी एक आईएफएस भी वैसे ही नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। तो उनके जो प्रेसिडेंट और उनके साइकोलॉजिकल स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के जो कोऑर्डिनेटर है वो वहां पे थे, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखा। और डॉक्टर पूनम नायर जो अभी यहाँ मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, और उनको ये कॉन्सेप्ट भी हॉलिस्टिक अप्रोच का बहुत अच्छा लगा, जबकि उनका खुद का अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत एक्सपर्टीज है, पीएचडी है वो, और पिछले 30 सालों से भी अधिक साल आईवीएफ के पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए इंडियन गाइडलाइंस नहीं थे साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए। इशरे के जो यूरोपियन सोसाइटी के गाइडलाइंस यूज किए जाते थे, जैसे एआरटी लॉ आ गया है इंडिया में, असिस्टेड रिप्रोडक्शन जो इनफर्टिलिटी की मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, और उसमें काउंसलर का एक रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। लेकिन उसके लिए हम और कुछ गाइडलाइंस बना सकते हैं। इस उद्देश्य से डॉक्टर पूनम नायर काफी इसमें एक्टिव है और ये गाइडलाइंस कंसेंसस बना रहे हैं। ये गाइडलाइन के बुक भी रिलीज करने वाले हैं। इनकी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में दिसंबर 8, 9, 10 को होने वाली है। तो शॉर्ट नोटिस पीरियड में अभी हमने कार्य चालू किया है। तो इसके लिए कुछ एविडेंस के बेस में हमारा रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तो उसीलिए हम अक्टूबर से 1 मंथ के लिए पेशेंट्स के साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसमें साइकोलॉजिकल स्केल हम क्या यूज करें, उनका क्या वेलबींग स्टेटस है, वो हम प्री इंटरवेंशन उसका डॉक्यूमेंट करें, पोस्ट इंटरवेंशन उसका डॉक्यूमेंट करें, ताकि हमारे पास जब हम दिसंबर में ये रिलीज करें तो कुछ एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि वी आर इन दी एविडेंस बेस्ड इरा। तो क्योंकि इनफर्टिलिटी का इतना एक स्ट्रेस रहता है, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है इंडियन कल्चर में कस्टम के अनुसार, दूसरा जो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है उसका एक्सपेंसेस भी काफी होता है, तो उसका एक स्ट्रेस होता है। और इस स्ट्रेस के रिलेटेड फिर रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके वजह से फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आते हैं, काफी सारे इलनेसेस उसके वजह से होते हैं, ट्रीटमेंट काफी लेंदी हो जाता है, और फिर कभी कभी लोग डिसकंटिन्यू करते हैं ट्रीटमेंट। तो हम क्या कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हैं? इनफैक्ट मुझे तो कभी लगता है कि इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन ही हमें चेंज करना चाहिए। वो तो एक सिंड्रोम है। इट इज नॉट जस्ट द इनएबिलिटी टू कंसीव, बट इट इज द syndrome which debilitating physical, mental, emotional distress, and somewhere we need to help these patients। तो कहीं ना कोई हमें उनके लिए कुछ करना जरूरी है। और गवर्नमेंट ने आरटी लॉ में साइकोलॉजिकल जो, जस्ट 1 मिनट, साइक जो काउंसलर का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम कुछ ना कुछ उनको गाइडलाइंस दे, ताकि बिफोर वी स्टार्ट ट्रीटमेंट उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। और इट इज नॉट ओनली असेसमेंट, हम उन्हें हेल्प करें, हम उन्हें कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस दे, तो वो भी एक गाइडलाइन में आना चाहिए। तो उस लक्ष्य से ये मीटिंग रखी है। बाकी आगे के लिए मैं स्वामी भाई को भी एड्रेस करने के लिए कहूंगी। फिर हमारे बीच में डॉक्टर पूनम नायर है, उनको हम एड्रेस करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है। और फिर आप सभी जो एक्सपर्ट्स आज के मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, हम सभी से इनपुट लेंगे। फिर एक बार मेडिकल विंग और हमारे आईएफएस और सभी के तरफ से आप सभी जो आज ज्वाइन हुए हैं, अपना
अमूल्य समय दिया है। आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी का आज के मीटिंग में स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। ओवर टू स्वामी भाई। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं इस मीटिंग में अपने सभी डॉक्टर फ्रेंड्स का बहुत बहुत प्यार से मैं स्वागत करता हूँ, particularly डॉक्टर पूनम नायर। वी हैव गॉट एन एमिनेंट गेस्ट टुडे, डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, और बाकी सभी जो हमारे इस टीम में हैं उन सभी का मैं बहुत प्यार से स्वागत करता हूँ। इनफैक्ट शुभदा बहन ने बहुत अच्छी भूमिका बना दी है। द एजेंडा फॉर टुडे इज कपल ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज हम लोग ये जो रिसर्च कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च एट मल्टी सेंट्रिक लेवल्स पर, तो एक तो कहाँ कहाँ पर हम ये कर सकते हैं क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र पर जुड़े हुए हैं, तो कैन वी डू एट मल्टी सेंट्रिक लेवल्स, नंबर वन। नंबर टू, द एजेंडा फॉर दिस मीटिंग इज कि हम लोग क्या क्या मेथोडोलॉजी करना है, मोरलेस हमारे पास रेडी है। ओके, विधि रेडी है क्योंकि इसका टेस्ट ट्रायल हम लोग पिछले 5-6-8 महीने से कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। तो वी हैव गॉट मोरलेस द मेथोडोलॉजी रेडी। उसमें फाइन ट्यूनिंग जरूर जरूर हो सकता है। ओके, बट अभी हमें ये करना है, हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आज ये लेना है कि जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं, ओके, उनको हम कौन सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि एक बार वो फ्रीज हो जाएगा तो सभी सेंटर्स पर हम लोग वही स्केल्स को हम यूज करेंगे। दैट इज अ सेकेंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज किसी भी रिसर्च में जो उसका जो एनालिसिस है, पर्टिकुलरली उसका स्टैटिस्टिशियन की बहुत बहुत जरूरत है। तो आज मुझे बहुत बहुत खुशी है कि हमारे इस पैनल में वी हैव गॉट अ वेरी एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन, डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी। वो हमें, एंड ही हैज बीन टू काइंड इनफ that he will be a part of this particular project and he will assist our team in creating the statistical tools, the analysis part of it, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है। तो आज हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। तो बिफोर आई गो ऑन टू दैट एजेंडा ऑफ मल्टी सेंट्रिक सेंटर्स एक्सेट्रा, मैं आप सभी को डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी का आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस श्रीवास्तव जी टू ऑल ऑफ यू. First of all, he's a very, very beautiful and a very noble personality. And most important, he's a very good friend of mine. राइट, ब्रह्मा कुमारी से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे दिल के हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात मैंने उनमें देखी कि इस प्रकार के रिसर्च में वो अपना बहुत दिल व जान से हेल्प करने को तैयार होते हैं। एंड ही हैज कंसेंटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल टीम एंड असिस्ट ऑल ऑफ अस। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो होता है, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। हम लोग बाकी सब कुछ सीख सकते हैं लेकिन उसको एनालिसिस करना, क्योंकि इसकी अपनी एक काबिलियत होती है, अपना एक स्किल होता है, अपना एक हुनर होता है। So that one can develop it, but it takes a huge amount of time. So it is not that कि आज मैंने पढ़ाई किया और मैं कल बन सकता हूँ। तो हमको एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी। एंड थैंक्स टू ऑल योर गुड विशेस एंड ग्रीटिंग्स कि परमात्मा ने कैसे सुंदर नोबल व्यक्तित्व को हमारे सामने लेकर आए हैं। In briefly, I would love to introduce him. He is Dr. Mukesh Srivastav, based in Lucknow, and right now he is working as a professor in biostatistics at Amity Institute of Biotechnology, that is Lucknow. Number two, जो ब्रह्मा कुमारी और मणिपुर यूनिवर्सिटी के बीच में जो रिसर्च चल रहा है, उसमें he is an official professor who is guiding everybody as far as the statistics is concerned. In fact, he has more than 37 years of experience in the Central Drug Research Lucknow. तो बेसिकली वो एक साइंटिस्ट भी हैं और उन्होंने more than 37 years इसी काम पर उनकी काबिलियत है। Work for more than 20 clinical trials, including multi-centric trials. So I'm sure Baba has sent Paramatma has sent a very wonderful person to all of us. He's participated in almost all preclinical studies. He has published more than 80 scientific papers. तो नेचुरली उनका वो अनुभव हम सबको जरूर जरूर मदद करेगा। He's reviewed 3 books and he's an inventor for the diagnosis of osteoporosis in rats, and that is for the first time in the whole world. तो हम जोर से तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी के लिए। एंड ही इज ऑल्सो डन द फिंगरप्रिंटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा, and his training is imparted on various
like non-linear parameter estimation, time series analysis, identification of distributors, etc., 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 selection of appropriate statistical test for group comparisons. I think that is one of the area that we are looking for the guidance from Dr. Mukesh Srivastava. तो सर आपका हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं और 1 मिनट में हम इस टीम का भी परिचय दे देंगे। ये टीम इज अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग देश के अलग अलग जगह से आज जुड़े हुए हैं। बस एक सेलेक्टेड टीम को यहाँ बुलाया गया है जो अपने अपने स्थान पर ये जो रिसर्च करेंगे। तो ये काफी समय से इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन नाउ वी हैव डिसाइडेड टू वी दैट वी हैव टू डू इट वेरी साइंटिफिकली। अभी तक हम लोग अपने मेथोडोलॉजी को थोड़ा टेस्ट ट्रायल कर रहे थे, तो अब मोरलेस हमको लगता है कि वो मोरलेस फ्रीज हो गया है। Now is the time to conduct the scientific research. So I welcome all of you to this wonderful meeting, and I'm sure we will have a very wonderful heart-to-heart discussions, and we will be able to start this particular project. Thank you. Om Shanti. Over to Dr. Shubhta Behan. So thank you स्वामी भाई एंड फिर एक बार मैं मुकेश भाई साहब का इस ग्रुप में मैं तो सर या डॉक्टर नहीं कहूंगी, ये तो बड़े भाई साहब है हमारे। तो हमारा बहुत हक है कि आप हमें गाइड करें इसमें। और जैसे दो यहाँ पे स्टॉलवर्ट है, एक मुकेश भाई साहब और एक डॉक्टर पूनम। तो डॉक्टर पूनम जैसे मैंने उनका सीवी तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन जैसे मुकेश भाई साहब है वैसे ही डॉक्टर पूनम भी पिछले काफी सालों से इस प्रोजेक्ट मना इनफर्टिलिटी में वो कार्यरत है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आईएफएस इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी है, उनके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर केडी नायर, तो मैडम जो है उनकी वाइफ है। और ये जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है उनके अलग अलग, तो जो साइकोलॉजिकल ग्रुप है उसके ये हेड कोऑर्डिनेट करते हैं। और काफी सारे इनके भी मल्टीपल पेपर्स प्रेजेंट हो चुके हैं। और इनका मेन मैंने यही मोटो देखा कि निस्वार्थ बहुत दिल से ये चाहते हैं कि जो हमारी इनफर्टिलिटी के जो बहनें हैं और भाई भी जो इतना स्ट्रेस से गुजरते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको हम दिल का सुकून दे सके। तो ये मैंने उनकी आंखों में देखा कि वो उनके एक लाइफ का जैसे एक सपना है और लाइफ का अचीवमेंट होगा कि यदि हम उनको स्ट्रेस फ्री कर सके। तो इस लक्ष्य से हम सभी को बाबा ने अंडर वन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। और अभी जैसे स्वामी भाई ने भी कहा कि मल्टी सेंट्रिक रिसर्च हम करना चाहेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे यदि हम 1 मंथ में हमें अराउंड 50 पेशेंट्स लेने हैं, तो 2-3 जगह से हम उसको रिक्रूट करें और फिर 1 मंथ का हम उसके ऊपर इंटरवेंशन कर सके। तो डॉक्टर पूनम नायर के खुद का उनका आकांक्षा इनफर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर दिल्ली में है, तो वहां से फिर डॉक्टर सुनीता है जो कर्नाटका में उनका सेंटर है। फिर नागपुर से डॉक्टर स्वाति गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वहां जो आईवीएफ सेंटर है वहां पे वो कोऑर्डिनेट करेगी। मैं खुद न्यू बॉम्बे के सेंटर से कोऑर्डिनेट करूंगी। और तो ऐसे ये प्लान किया है। तो अभी मैं चाहूंगी डॉक्टर पूनम नायर भी थोड़ा डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव को और सभी ग्रुप को ये थोड़ा सा ब्रीफ करे कि इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में साइकोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो उसी के अनुसार उनका आगे का ट्रीटमेंट, जब हम साइकोलॉजिकली उनको रिलैक्स करेंगे, उनके रिजल्ट में भी सक्सेस मिलने का चांसेस बढ़ता है, टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, और फिर उनका जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अदर हेल्थ इश्यूज जो है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। इनफैक्ट भाई साहब इतना स्ट्रेस रहता है, काफी पेशेंट माना 1-2 पेशेंट ने मुझे ये यहाँ तक कहा कि मैडम आप कुछ भी करो, बेबी होना चाहिए, बेबी होने के बाद वो मर भी गया तो भी चलेगा लेकिन बेबी होना चाहिए। तो इतना लेवल तक उनको स्ट्रेस होता है। और काफी जगह गाँव में तो माना अभी भी विलेजेस में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी रहती है, लेकिन उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसीलिए डिवोर्स तक दिया जाता है और उन बहनों को इतना कुछ सहन करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमें उनकी आईवीएफ आईयूआई का रिजल्ट तो मिलेगा जो भी होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इम्प्रूव होनी चाहिए। उस लक्ष्य से हमें ये जो साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर काम करना है। तो डॉक्टर पूनम नायर अभी आप बताइए। Om Shanti, Dr. Shubha, thank you so much for making me part of this group. I mean, I am so enthusiastic. I'm so happy. I have no words to express. And I'm so looking forward to meeting Shivani. I am her follower
since long. So it's like a dream come true for me in every way. Now, basically, I have a team of experts. I invited my psychology colleagues. We have Dr. Vikas, he's head of Department Psychology from SGT University in Gurgaon. And he has already worked on Garb Sanskar. So I thought he would be definitely of great value for our work. Dr. Amita Puri is again an amazing lady with the PhD clinical psychology, and she's already doing subconscious healing, energy healing, and a work which is way beyond Western psychology. And plus her compassion is, it has no bounds. So I think, and then we have young PhD scholars, three of them, Archika, Ashima, and Purnima. So, I hope somewhere they will be involved in taking this up further, either for PhD or for at some level. So basically what Dr. Shubha has said, yes, it is true. The stress is there. And we have the ASHRAE guidelines, which are very sensible. Like 2015, they released the guideline, which is based on almost 20 years of worldwide research on how psychological support can be given. And the lady who spearheaded, Dr. Sophia, is also part of our consensus statement group. We are developing a consensus statement. It is not a guideline, but a consensus statement with experts from IVF field, with your Raj Yoga field, and from psychology, so that we can give the best guidelines practice to follow. Now, in this, we have already requested, we've given a one whole unit for Raj Yoga, for your contributions. And in the consensus guideline, I've again told Dr. Shubha, I request to all of you that right now the research is in process, but that does not invalidate or dampen our Raj Yoga practice at all, because there is a foundation, years of research on the mother and the baby, how they interact in the womb, which is hardcore scientific evidence on epigenetics. And we have in psychology a huge amount of research on a newborn baby with whom the mother attachment is weak, how it impacts right for the next 40 years. So we are not only concerned about delivering a baby, but with Garb Sanskar, we have got an opportunity, which is, I really truly believe it's a very big opportunity for us to contribute for these women who are really suffering. I mean, their domestic violence is there. Sometimes they are very poor and they have no support. Literally, we worked for 2.5 years with domestic violence and pregnant women. That time with very limited input of Garb Sanskar, which I got from my Vedic Institute in Nasik. I could see the result even then, the very poor woman had nothing, but that Garb Sanskar gave her such a spiritual energy and light. She got the strength to navigate through poverty, through beating, through abuse, and deliver a healthy baby. I mean, these are my observations. And this scientific, like we are in the era of evidence. So this is a great opportunity. Plus, we have also 3 years of work with Dr. Sudha Prasad in Maulana Azad Medical College, where we work directly with IVF patients. That time I was doing yoga relaxation. There also we got very good results, where even the age of the patient did not matter in terms of pregnancy success and so on. So this was a long-term study, ICMR funded. So here now the advantage of Raj Yoga, that the way you are doing, first of all, it seems to me integrate many components of the ASHRAE guidelines already. So if you like, I can share with you briefly the ASHRAE main processes, and you can see, I can see very clearly where the Raj Yoga components are already in place in providing psychosocial support.
to the patient. But where there is a small, maybe a requirement that is, which they again repeatedly highlighted, that during embryo transfer, there is a huge escalation of stress. So what we do is, just before the embryo transfer, when the lady is in waiting, we do a deep relaxation meditation, and so that she becomes fully relaxed and mind free. But of course, that 20-30 minutes, it has to be supported by the foundation, which you provide online. So the thing is here, how to make sure that the patient is actually participating. There somebody has to follow up, somebody has to prod, somebody has to motivate. So from the evidence point and research point, we need the actual data, that how many did, how much practice. And so that is one point. And second, as Dr. Shuddha said, that the outcome measures. So Dr. Amita and our team from the Citizen, we have recommended certain tests. The rationale of it is also very much in place, in the sense that, again, the way the mental distress is expressed by an Indian patient is not the way an American lady expresses it. The way the words they use and so on. So we have in the Department of Psychiatry, PGI Chandigarh, as well as in Rohtak, we have developed tests which are derived from the very words which the patient is using. They have been standardized. They have been used extensively in research, but unfortunately, because it is purely Indian, they have not reached the international market, so to say. And we have international tests which are also there, but they need to be adapted for Indian settings. That is a project in itself. So that way we can communicate with the international audience more easily if you are using their tools. But right now, the straight away getting go, we have worked out 3-4 questionnaires which I have suggested to Dr. Shubda. They are very simple questionnaires. They are self-administered, easy to score, and they can even be administered by a non-psychology person with, very easily scored and interpreted. Immediately we know the level of stress. We understand this is a patient who's likely to go into a mental breakdown and so on. And I think the way I understand, you have a 30-day package. And definitely, if we can have pre and post, we have suggested 4 psychological tests: PGI Health Questionnaire N2. Then we have a PGI Personality Trait Inventory with we've lifted out the subscale for depression, because anxiety, depression, and then we have well-being, which is a very important measure. And fourthly, which it's up to you, you may or may not use. I think 3 are actually enough. We don't really need locus of control. That is another dimension of the SEPT. So this is the PGI General Wellbeing Measure. It's very easy. It's available in Hindi and English. In 10 minutes, you have scored. You have an index. And we have got the norms also, which have been provided, which are there. You can just Google search and you will find hundreds of studies supporting these across various population, across various illnesses, in various conditions, all across India. So for us, this literally is the gold standard. PGI Health Questionnaire N2. Then we have PGI Wellbeing Scale. And this personality trait inventory is a very comprehensive. It's derived from the internationally used MMPI. But again, we do not need all those personality variables unless one of our PhD students decide to pick it up for their research. But for our purpose, for outcome, we thought of focusing on depressive tendency, which is again, it is a small subscale. And again, very quickly, we know what is the level of depression before and after. These are standardized and well adapted. Next is, these are the 3 tests which we are recommending. Then there are tests like DAS, which was
uh, suggested by some workers. That is a good questionnaire, yeah, but it is used after the diagnosis is established of clinical depression or anxiety. So it's not suitable for infertility patients. We are not in a psychiatry setup. And secondly, if you go through the questions, the patients find them very cumbersome, the way they are worded, and it's literally it's not easy for them to do. They get confused and they end up just they're self-report, so they just end up tick tick tick, and that's it. We don't even know if it is valid. So somewhere that is very important, because self-report measure means that they are not just doing it without thinking because unko khatam karna hai, kaam khatam karna hai. No. So in these, we have a lie scale also in PGI's questionnaire N2, from where we are able to assess if the person has really done it as per their internal state, or if they've just been trying to present a socially desirable thing that I'm fine, I'm fine. And Ms. Purnima also shared a finding when they were working with uh, Air India patients, and there were women who were trying to fake it. So, they clinically we could judge they are not okay, but in the test the scores were coming okay. But in PGI N2 they got caught out on the lie score. So that is why that test is, I think, invaluable and practically irreplaceable. I've used it myself in about 7-8 projects. Besides me, it has been used by so many others. So So you mean only 3 scales are sufficient, na? Yes. Well-being, N2 and PTI. For PTI scoring system, what we have to use scoring system? Scoring system, I have got the norms. Dr. Amita has sent me just now. Okay, fine. So we'll share it with Mukesh Bhai sir. Yes, we will share. तो मुकेश लेकिन भाई एक बात साहब, है, ये डॉक्टर I शुभदा think- बहन एंड डॉक्टर पूनम नायर, ये तीनों स्केल हमको एक ही कपल पर तीनों एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? वो थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? कितना टाइम लेता है, और इज इट ऑल द थ्री रिक्वायर्ड फॉर द सेम कपल? It's better because it kind of counter and it verifies them. Actually, sir, when you start doing them, so it's actually so simple and so fast. If you go, it looks like Okay. 50 questions is lot, but you may please go through it and then. But No, so we decide that we will do it for all the three for the same couple. Will that be okay, Shubda Ben? that is yeah, my that's what I wanted to know, recommendation. whether it is mandatory, it is suggested that we have to use 3 scales, because last time the research which you did, I think you used almost 7 scales. I was Yeah, that for was because 200. yes, that was Yeah. the first of its kind, and it was an ICMR funded project. And we were doing a very in-depth 2-year. It went on actually for 3 years. So we were exploring from every angle, and this was the first study. We tried Ferticol also, which is a European test translated in Hindi, so difficult that in the end we had to abandon it. We worked Dr. with Mukesh Srivastava, you would love to say something? Please. I don't have much experience on dealing with psychological tools. I have very little experience for that. Only हाँ, नहीं मतलब एक ही कैंडिडेट को हम 3 स्केल पर काम कर सकते हैं ना? हाँ सर, कर सकते हैं और करना भी चाहिए, हमको लगता है कभी कभी, क्योंकि हर ठीक है, स्केल का ठीक। पर्पस अलग अलग होता है और कहीं ना हाँ कहीं जी। आपस का कोरिलेशन हमको एक नई इंफॉर्मेशन जो है जनरेट करके देगा। yes, Okay, exactly. done. Very, very, yeah, exactly. और क्रॉस चेक भी होगा ना, बिकॉज आज समवेयर दे आर, इफ दे आर लाइंग इन सम वन पर्टिकुलर स्केल, तो दूसरे स्केल में तो वो काउंटर चेक मुझे लगता है होने के लिए। और पीजीआई वेलबिंग तो 20 क्वेश्चन ही है, और N2 में अराउंड 60 क्वेश्चन है, और इसमें 90 क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चंस पढ़ते समय भी उनका मुझे लगता है वो सॉर्ट ऑफ अफर्मेशन ही हो जाते हैं। एक बार करना हम चालू करेंगे तो शायद फिर हमें पता नहीं चले। बस मतलब Dr. Shobda, sorry, excuse me. The personality inventory, we are only taking one subscale out of the whole lot. ओके, नॉट एंटायर 90. There are total are 90, but Right. the question is just about six items. That's it. Okay. So, Fine. okay.
So I'll just clarify again with you Yeah. regarding that PGI, Yeah. PTI, that I have not understood completely. Yeah, I yeah. thought we have to take completely. So that you suggest, then how many patients minimum we should have statistically, and regarding these 3 scales, so from when can we start enrolling patients? तो ये सब भाई साहब बताएंगे तो अच्छा होगा. स्वामी भाई, यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जब भी Please. पेशेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो मोस्टली ये लोग थोड़ी हरी में रहते हैं, एंड दे डोंट गिव इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन, कि हमने वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया उनसे। वो बस उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं और समटाइम्स इन वेरी मैकेनिकल वे वो उसको टिक कर देते हैं या अपना आंसर की चॉइस दे देते हैं, तो उससे उसकी थोड़ी सी वैल्यू जो है कम हो जाती है। इसीलिए 2-3 टूल्स हम लोग यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो है वो चीजें पकड़ में आ जाएंगी। Okay. Yes, exactly. And sir, if you look at N2, it is so in such a subtle way, it about the psychological dimension that it's almost starts with आपका पेट दर्द है, सिर दर्द है, चक्कर आते हैं, things which patient is expected to be asked in the hospital, and then slowly it merges onto the psychological. So I think by the time they reach that actual some of the psychological components, they are okay. I mean, our experience has been very good with this scale. We've given it to 20 in a group also administered and used it reliably. Beautiful. अच्छा डॉक्टर पूनम नायर, जब ये कपल हमारे क्लिनिक में आते हैं तो वी शुड गिव देम द क्वेश्चन एंड लीव देम इन आइसोलेशन, और शुड देयर बी अ काउंसलर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम assisting them or something like that in case if they have got some doubt in a particular question? Yeah, somebody has to be there because like some are of low education, if they have doubts, otherwise the sentences themselves are extremely simple, but sometimes in anxiety they start having doubts and they start repeating. So Okay. somebody, So counselor is expected to be in front of them, right? yes, ideally should be. But with N2, our experience was as a screening tool in the OPD. It was not the counselors who administered, it was also other people who administered, because we were screening, we were picking out. And once the screening was done, we took the high stress cases for in-depth assessment. Yeah. Okay. Mhm. Okay. Anything else you would like to guide us, because you have already done research on infertility patients? So what parameters or what points we should consider while enrolling these patients? So कुछ tips आप suggest करेंगे? मैं एक चीज पूछना ये चाह रहा था जी. कि ये जो आप बता रही हैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स, इनको फिल कौन, हस्बैंड करेगा कि वाइफ करेंगी? अभी हमने वाइफ से ही करवाया था, but it's a very good question and it's the now trending in ASHRAE ki why is the man left out, so ideally it should be both. बोथ, यस, And कंसिस्टेंसी, yes, टू गेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द, yes, and the beauty of Raj Yoga is that you have affirmations for the men also, so that they are not shy, they are not inhibited, they are opened out about going through the process, and not just saying to the wife that it's your job, you go now and attend the clinic. That It is means, Dr. Poonam Nair, we have to give one set of questionnaire to both the husband and one set to the wife. That's what you're trying to say, right? यस। yeah, ideally yes, I think that would give a much ऐसे स्टैंडर्ड रखते हैं ना, अच्छा है, थोड़ा हस्बैंड को भी काम करने दीजिए। Because ultimately we are looking at the improving the relationship, improving the familial bonding, we are looking at the quality of life, then I think we should make that as a guideline, so start with that, so then it comes in the guideline also. Good, good. yeah. स्वामी भाई, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि जो मेरे को जरूरत भी लग रही है इसकी, कि हस्बैंड और वाइफ जिसमें आंसर दे रहे हो उनको अलग अलग रूम में रखा जाए कि वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस ना कर सके आंसर्स, वरना क्या कहते रियलिटी हैं का डॉक्टर पता नहीं पूनम नायर? लगेगा। Doctor, may I request is Dr. Amita is here? Doctor, yes, Amita is here. Dr. Amita is here. Dr. Amita, she is expert in marriage counseling,
And maybe you can tell us something here. Welcome, Dr. Amita ji. Dr. Amita. Hi, yeah, good evening. Thank you. Welcome, welcome. Yeah, Please so- guide us in this matter. Ji, so I was listening to the Dr. Poonam's discourse on this, and I feel that it's Hello. separate so we can connect. डॉक्टर अमिता, जस्ट सजेशन, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, सो जस्ट ऑडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑफ. Okay. Yeah. Dr. Amita and have got tests on something which helps to measure the marriage Put that, dynamics other and the variables. relationships. Yeah. Am I audible? Yes, Now yes. you're audible, doctor. Yes, Please. Yes. Acha, okay. So ideally, both of them should take the test so that, we can understand the psychological dynamics which is going within the couple, around the couple. And yes, technically, in marriage counseling also, we do here also, when the assessment is being done, so separately hum kare. And we can discuss the report also together later on, but separate, ideal should be separate so that we can even understand when they are answering the questions, जैसे वो question answer कर रहे हैं, उससे भी हमारी clinical observation से भी बहुत बातें निकल के आ जाती है. और ये जो N2 टेस्ट है और वेलबींग टेस्ट है, उनकी ब्यूटी ये है कि जब वो हम बातें उनसे कर रहे हैं, उनसे टेस्ट आइटम्स पूछ रहे हैं, लेकिन दे आर मेड इन सच अ वे कि पेशेंट को लगता है कि कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातें ही तो हो रही हैं और उसके दिल की बातें निकल रही हैं, उसके अंदर के भीतर की बातें बाहर आ रही हैं. सो दैट इज हाउ दीज टेस्ट जो डॉक्टर पूनम ने बोला, दे आर लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड. तो कॉन्वर्सेशन करते करते में बातें बहुत अंदर से निकल आती है, विच विल हेल्प लेटर ऑन. हमें रिपोर्ट में भी वो चीजें आती हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में भी आती हैं, और उसके बाद थेरेपी उन्हें किस तरह की देनी है, कितनी देनी है, फ्रीक्वेंसी एंड अदर थिंग्स, वो फिर हम तय तभी कर पाते हैं. तो बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम कर पाते हैं व्हेन वी हैव ऑल दीज काइंड ऑफ असेसमेंट पैराडाइम्स विद अस, जिसमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल. You mean to say, Dr. Amita ji, ki the counselor has to do this conversation with the husband or wife? No. जब जब टेस्ट ले रहे हैं तो द नॉन साइकोलॉजी पर्सन कैन बी टॉट yes to observe these things, but if a psychologist is doing, तभी अभी latest guidelines है ना कि psychologist should be attached to every IVF center. So when a psychologist is taking the test, तो वो जो बातें करते करते, अच्छा आपको आपका अच्छा, मन अच्छा. कैसा रहता है, आपको उल्टी आने का मन करता है, सोशल उसमें आप सब जब भीड़ भाड़ से डर लगता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे, वो फ्रेम्ड ही ऐसे हैं कि उनको लगता भी नहीं कि हमारा टेस्ट हो रहा है, उनको लगता है हमारी अंदर की बातें ही तो पूछ रहे हैं, हमारी मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे इमोशनल कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं. दे आर फ्रेम्ड इन सच, दे आर सो सिंपल. और यही ब्यूटी है, इसी और उसमें. So, Dr. Poonam, we don't have Yeah. to sit and ask them the questions. No, we will be No, giving them no. the questionnaires and then they will be ticking Yeah. it. Only thing, it appears as if we are doing conversations with them. One kind of psychologist, counselor is talking to them. Actually, But yeah, this is yeah. what Dr. Exactly. Amita is यही talking ब्यूटी है. about. Exactly, Questions right. are framed in such a way. और ऐसे और जो डॉक्टर पूनम ने सोशल डिजायबिलिटी का वो जो लास्ट 10 आइटम्स है, लाइफ स्कोर है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमें आता है कि इनका वेलबींग स्कोर चेक करके भेजिए, रिपोर्ट भेजिए. तो और हमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में मतलब समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम है पर्सनालिटी में. मतलब एज साइकोलॉजिस्ट, मी एंड माई टीम मुझे पहले ही बता देती है, इससे पहले कि पेशेंट लास्ट में तो मेरे पास आते हैं, तो क्लाइंट या पेशेंट तो जब आते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये ऐसा पर्सनालिटी पैटर्न है या फ्रैक्चर पर्सनालिटी पैटर्न्स हैं, या ऑलरेडी डायग्नोस्टिक हो जाता है, बट टेस्ट स्कोर्स में वो नहीं आ रहे होते. सो नाउ फिर उसके बाद देन सडनली N2 में लाइफ स्कोर हाई आ जाता है. So that is correlating ना. ऐसे बहुत बार हुआ है कि माय इंटर्न्स विल कम, माय टीम मेंबर्स विल कम कि मैम
टेस्ट स्कोर्स में नहीं आ रहा, डिप्रेशन है टेस्ट स्कोर में ये नहीं आ रहा, बट वी नो द क्लाइंट इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस डिस्ट्रेस या सम वायलेंस समथिंग एट होम, हमें लग रहा है, लेकिन लाइव स्कोर हाई आ गया, इसका मतलब प्रॉपर उसने आंसर सोशली डिजायरेबल आंसर्स दिए, उसने सही आंसर्स नहीं दिए, तो वी कैच, मतलब ऑफ कोर्स वी डोंट कन्फ्रंट देम, ये भी उनका राइट है, इमोशन वेरिएबल है, लेकिन नाउ वी नो कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन द थेरेपी देयर. And I think what Dr. Amita is talking about is a very deep counseling process where you are observing verbal, non-verbal, correlating so many things, which is a professional issue. But right now, when we are collecting evidence database, we have to be a little bit cross-sectional in our approach, which in infertility setting is like through these tests, like we did with domestic violence cases. Using these tests, we were able to pick out the high risk cases, which then can go through a very in-depth process with a professional counselor with background. But if we are doing a pilot study 30 days, then and we know that we don't have the kind of psychology manpower like it's in government hospitals anywhere, it's not even there. In AIMS, there's one clinical psychologist handling the entire show, which is ridiculous actually. So even in our setups right now, the way we are in the IVF setup, we do not have counselors, we do not have, so, and we are trying to introduce this methodology for the patient, and we need to pass through the channel of evidence. So to collect that evidence, I think this N2 and these questionnaires can be administered and used cross-sectionally even without the qualitative data, which comes from a highly specialized and a sensitive empathetic counselor. So right now we are good with that, I think, because now our focus is research and data and getting it in 30 days, or even maybe longer. But what ma'am is talking about is maybe a PhD project in itself, which can be taken by our 3 students who are sitting here and who are all interested in this. Mhm. Good evening, everybody. Poonam ma'am, can I come in? Ashima this side. Yeah, sure. Well, everybody is talking of doing it in 1 month. And I think if we have a lot of people at one place, instead of just making them sit separately, husband and wife definitely separate. So we can have groups of women in one room and a counselor there who's explaining the entire thing to them, and they're filling in the thing. That will make the process faster, and that will have the data collected, because that way they will have confidence of each other around कि ये लोग भी तो भर रहे हैं ना. अगर आप एक इंसान को एक काउंसलर के सामने अकेले, if that is possible, and I think with the Brahm Kumari setup, that would be not a difficult thing to do. So that will make In fact, Dr. Ashima, what I was thinking, like right now also we take them to the meditation hall, we relax them. So same way we can, collect all of them, those who come in the OPD, just do some meditation, and then once they are relaxed, then they can feel. In fact, I was even thinking, it will not be a separate, it will be a group thing. Yes. And it worked very well with our OPD cases in the hospital, because there were hundreds of patients and we had to screen out. There was no way for one-to-one. So This is a very I think, wonderful but point yes, which has been husbands and told wives by. should be sitting separately. Husbands and wives should be sitting separately. yeah. नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया आशिमा जी कि सभी लोग भर रहे हैं ना, तो सबको मोटिवेशन मिलता है. Yeah. That's a And very good valid point. I think men will also If feel that setup can be okay. done, that would be beautiful. Yeah. Yes. You certainly appreciate that point. Yeah. Yeah. Thanks. Any other inputs for anybody? Otherwise, Mukesh bhai sab हमें और guide करेंगे. तो अभी तो Is it तीनों possible जो for स्केल्स है जो अभी हाँ. हमने डिसाइड किया है, वी विल सेंड इट टू डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, वो थोड़ा सा देख लेंगे. एनीथिंग एल्स डॉक्टर मुकेश जी? यस सर, ये जो पेपर्स आपने भेजे थे मेरे को, तो मेरा तो एज ए स्टैटिस्टिशियन मेरा ये सजेशन है
कि एज फार एज पॉसिबल आप क्वेश्चनर्स को ऐसा डिजाइन करिए कि उनके आंसर जो है क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमारे पास कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाए, Yeah. क्योंकि Yeah. क्वालिटेटिव डाटा के अंदर उतनी डीप इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती है, इस तरीके की एनालिसिस नहीं हो पाती है, बहुत तरह की इंटरेक्शन स्टडीज नहीं हो सकती हैं जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा में हो जाती हैं। हाँ ना, quantitative data ही है सर, बिल्कुल absolutely quantitative. In fact, qualitative data is also very, very important, but at the way we are proceeding, we can't integrate it right now, as far as I can see. You know. एंड सेकंड थिंग कि right from the beginning the researchers should be very clear about what are the dependent variables and what are the independent variables in the research. ये मोस्टली कंफ्यूजन रहता है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। लोग एक बार ना एक डॉक्टर मुकेश जी, ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है ना, ये बस ये भाषा आपको ही सिर्फ समझ में आती है, नहीं सर, सबके यहाँ टाइमिंग सारे पे जाते हैं। तो मेरे एक ख्याल से काम यहाँ जितने करिएगा, मैं आपको रिसर्चर्स बैठे रिक्वेस्ट सबको करता हूँ, पता आप तो है। एक्सपर्ट हो, आप ये स्केल देखिएगा और फिर से हम एक मीटिंग करते हैं, ताकि इसमें इस ग्रुप में जो रिसर्च कर रहे हैं उनको आप बहुत प्यार से ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझाइएगा। ठीक है सर। क्योंकि ना ये सबकी बस की बात नहीं होती है, नहीं आप भले सर, कितना भी डेफिनेशन दे मैं दो। मैं आपको एक स्टेटमेंट में बता देता हूँ कि व्हाट इज डिपेंडेंट हाँ प्लीज वेरिएबल। प्लीज प्लीज जो प्लीज। भी जो भी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा स्टडी के अंदर, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमारे स्टडी का इंटरेस्ट का है, सपोज हमको ये देखना है कि शॉर्टनिंग ऑफ टाइम हमको देखना है, मान लीजिए ट्रेनिंग के लिए, कि कपल्स जो है उनका टाइम शॉर्ट हो जाता है हमारी ओके ट्रेनिंग की वजह से ओके टू गेट द सक्सेस, मान लीजिए। ओके Yeah, yeah. ओके तो if this is the this is a variable, then this is a dependent variable of the study. ओके एंड जो भी हम ठीक है ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी हम उनके पैरामीटर्स को और बाकी चीजें देख रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे पर। ठीक है। Dr. Vikas is also an Hello. expert. Yes. Good evening, ma'am, and good evening, everyone. Am I audible? Yeah. यस यस या प्लीज प्लीज। हाँ Can जी। we? तो Yeah. सब एक्चुअली ये मेरी पहली इस तरह की मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग ग्रुप में, और काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी कुछ वेल थॉट ऑफ है, सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है और लॉजिकल है। जितना मुझे अभी तक समझ में आया है वो ये है कि वी आर असेसिंग द वेलबींग, जो इनफर्टिलिटी कपल्स है उनके हम लोग वेलबींग को स्टडी कर रहे हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस को देख रहे हैं। तो मुकेश सर, ये हो गए इनके डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्चुअली यही होंगे जो जो हम लोग एसेस कर रहे हैं अच्छा प्री एंड पोस्ट। ठीक है। तो ये इसका हो गया। इसके अलावा मैं एक और ऐड करूंगा, इसमें सोशियो डेमोग्राफिक डिटेल्स भी का भी एक अच्छा सा परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो वेलबींग है वो इकोनॉमिक स्टेटस और बाकी फैक्टर्स भी उसको इफेक्ट करते हैं। यस तो यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका इंटरेक्शन इफेक्ट देखना भी इसमें जरूरी है कि क्या वो फैक्टर्स भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पुअर जनरल हेल्थ और वेलबींग के लिए। I think the way Raj Yoga meditation is going, I think it surpasses the socio-demographics. The way No, it madam, makes a person. it is still it is required. Still, Yeah. it is required. Yeah. Yes. तो जो प्रोफॉर्मा बनाया है, आई विल सेंड यू दैट प्रोफॉर्मा also. नहीं, Along with the scale, you'll have to It is see the required. proforma also, where Yes, all yes. the socio-demographic parameters we have taken, because we'll have to see statistically क्या क्या वो parameters उसमें से कैसे लेने हैं, तो वो भी आपको देखना होगा। तो मैं आपको वो स्केल्स के साथ ये प्रोफॉर्मा जो बनाया है वो भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। जी। डॉक्टर शुक्ला, मेरे पास ये प्रोफॉर्मा आया था जी और मैंने सजेशंस करके डॉक्टर स्वामी भाई को भेज भी दिए थे ओके, तो मैं आई विल गो अपने थ्रू दो सजेशन के साथ। सजेशन। जी और डॉक्टर डॉक्टर विकास जो कह रहे हैं, आई 100% एग्री विद हिम राइट, कि हम लोग उनको भी जितना भेजेंगे, अच्छा हम डॉक्टर विकास जी को भी भेजेंगे, उसमें कुछ एडिशंस करना है, यू आर राइट। मोस्ट वेलकम। जी 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 ठीक है। सर, थैंक यू और सर। मैं एक चीज ये सजेशन और ये सभी से चाह रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिसके लिए मेरी नॉलेज बहुत कम है, कि जो राजयोगा मेडिटेशन
की चीजें हैं, क्या हम इनको किसी तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि मेरी स्वामी भाई से बात हुई थी पहले भी, जब मैं माउंट आबू गया था, तब वो ये कह रहे थे कि हम लोग जो है इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, और लेकिन सोचना पड़ेगा कि किसको कैसे कर सकते हैं। अभी नहीं तो एक काम डॉक्टर करेंगे। Well, I'd भूपेश like में to नहीं bring in है। a point here. I have found a study which happened in Canada or somewhere on Raj Yoga. Let me just cull it out and send it to Dr. Poonam and let her see if how they did it. In fact, I have one paper on effect of Raj Yoga meditation. They have divided into 3 groups. One was the control group without any intervention. The other one was with the relaxation therapy, and the third one was Raj Yoga meditation. So even that paper also, I will just forward it to भाई साहब. तो वो भी आप देख लीजिए. तो ये ठीक है। सब तो right. अपने कंसेंसस गाइडलाइन के उसमें प्लीज डाल दीजिए सो दैट दीज थिंग्स कैन बी टेकन अप प्रॉपर्ली. Right. सर पर Ma'am, इसमें are we going to consider मैं age group and span of infertility also in this? Yeah. Yes, it should be there. It is So it there. will be in the pro forma, no? So that is there, the age Yeah. of the patient, duration of infertility. So that pro forma I will send it to भाई साहब. Already भाई साहब ने देखा है और it जो is in the it is correction. there in the it is there in the inclusion criteria. Yeah. Pooja ma'am, और hi, Archika this side. Sir, when we are talking about this quantifying the data, so can we do it like what we are doing in meditation pre, during and post? जैसे पूनम मैम हम लोग उसको रिलैक्सेशन वगैरह जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के पहले हम लोग देते हैं जिस तरह से, उस तरह से उसको डेटा कलेक्ट किया जाए कि प्री में दे रहे थे, ड्यूरिंग में दे रहे थे, पास में दे रहे थे, देन वी कलेक्ट कि हाउ मेनी पीपल वी गॉट सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज एंड सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट एंड एवरीथिंग. Then we can collect in this way. That will be long-term study. Right now, what we are looking for a short-term study for 1 month, and here what we are looking at the psychological well-being, improvement in the psychological well-being with the Raj Yoga meditation intervention. What you are saying is absolutely correct. Ultimately, we have to look at the live birth rate, take-home baby rate at the end, but this will be an extension of study ahead. ma'am, how many sessions are there? How many? It's a 1 hour session daily for 30 days. So it's a 1 month intervention. So it will be a pre-intervention study and then post-intervention study. So intervention of 1 month, 1 hour each day. 1 Daily. hour each day. Okay, Yeah. and all the people who will be delivering the interventions are trained in this modality, Raj Yoga thing. Yeah, they all are trained, but then we have designed different modules, so it doesn't become monotonous. So every day there are different sessions, and in fact, we take some sessions on the holistic intervention, like we train them about the process of the IVF, so scientific session, then the psychological counseling session. It is not only Raj Yoga meditation, so along with that diet, exercise, then the sleep, so all these sessions are there. We have So it is affirmation therapy for them, affirmations of the process. Yeah, that is okay, why okay, it is follows already the ASHRAE guidelines. If sometime, if we have time, I will can take you through ASHRAE guidelines very quickly. In fact, by doing this kind of thing, you are already following the ASHRAE guidelines to a large extent, in a different way, you know. But it is there. All the components are there. So so the what I'll same suggest, same Dr. components will be administered to all the people in the study. The same components will be there. Yes, I think Dr. Vikas, if we have a full program outline which Dr. Shubda shared with me. So if we share that with you and once you observe, I think you will get the exact clarity. Yeah. Right, because I think delivering intervention is the major task here in the Yes, study. yeah. Otherwise, assessment is quite clear. It's not very difficult. People, even non-psychology people can do the assessment part. But the intervention will require, I think, some
So Dr. amount Vikas, of the training. intervention what we are doing daily is on the Zoom so that it is an interactive session. And suppose some once they miss some session, then it is YouTube live. So they need to see that session. So the participant who are enrolling in the study will see to it that they all 30 days they have to attend, whether in person live session or they have to see the recorded session. And it is not only that, we give them some homework daily. We have created a WhatsApp group, so they have Yes. to submit that homework also. So we see to it that they are in they are following the protocols or the affirmations whatever we have created for them. Yes, I yes, think that should that have is it that in is the required same. actually. One The one compliance question is I important. वन क्वेश्चन आई हैव कि डॉक्टर शुभदा ये बताइए कि जैसे आपने 30 डेज की उनको ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद आप उनका फीडबैक कब लेंगी? 30 days होने के बाद माना Feedback, yeah, we can take feedback, but the tests themselves pre and मतलब ये जो post. टेस्ट क्वेश्चंस आइटम साइकोलॉजिकल ये हाँ, जो भी इंटरवेंशन वाली जो चीजें हैं, ये आप कब उनको देंगी? sorry. नहीं, मे बी फर्स्ट डे में जिस दिन वो पहला दिन आते हैं पहले तो हम लोग प्री ले लेंगे, राइट. फिर एक महीना इनका इंटरवेंशन के बाद, एक महीने के बाद ले सकते हैं ना डॉक्टर साहब? Yeah. Dr. Poonam, it is the same, no? Because I have never done the psychological scale. This is the first time I Yeah, am it is the doing. same. Yeah. Same. You Yeah. pre and post 4 weeks will adequately show the change. Okay. Very strongly it will show the change, because our previous studies we've had assessment at 4 weeks, then at 3 months, at 6 months, and 1 year. So we know that within 4 weeks the change is maximum. It's almost peaks at that time, and then there is a plateau which is maintained. I mean, in the long term. नहीं वो तो So, ठीक है, व्हाट मेरे को जो लग रहा है कि राज योगा मेडिटेशन इट टीचेस इन लाइफ स्टाइल, Yeah. और 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो कपल्स हैं वो लाइफ स्टाइल को कितना याद रखते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाबा अक्सर कहते हैं नंबर वार बच्चे जो है चीज़ों को पढ़ते हैं और याद रखते हैं। तो उसके तहत अगर उन लोगों ने अगर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया है और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। जिन बच्चों ने थोड़ा सा कम समझा है या वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं चीज़ों को, उनके रिस्पॉन्सेज जो है चेंज होते चले जाएंगे। तो आपको अपने ग्रुप में से उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने लोगों ने अच्छे से किया है और कितने लोग जो है ड्रॉप डाउन होते चले जा रहे हैं, That I think that data क्योंकि is इससे आपके रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। and dropout and the reason for dropout also. It's a part of the study. नहीं, एक महीने के बाद बाई चांस उनका वो रिजल्ट नहीं yeah, आया तो दे विल again- कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट मंथ, करेक्ट? तो हम लोग फर्स्ट मंथ के बाद एक टेस्ट लें, फिर सेकेंड मंथ के बाद फिर से एक ले सकते हैं ना, until unless sometimes their complete cycle takes place for more than 3 months to 4 months also ना। मेरे ख्याल से व्हाट डॉक्टर स्वामी भाई सेइंग इज करेक्ट। हम इसको फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जब तक उनका सक्सेसफुल जो है एपिसोड हो नहीं जाता है Yeah, तब तक इसको हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम तो कंटिन्यूस चलता रहता है ना। Yeah, but 1 month I का think- एक होगा तो फिर नेक्स्ट मंथ फिर से स्टार्ट होगा, तो दिस पीपल कैन बी ब्रॉट ऑन टू, नहीं, लेकिन फिर उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे अप्लाइंग। डॉक्टर साहब, उनको फिर my- ट्रेनिंग नहीं देंगे। My request, what Dr. Srivastava is talking about is a long-term study, whereas we are talking about giving a 4-week study. एग्जैक्टली भाई साहब, क्या है कि अभी हम लोग इसको आगे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 1 मंथ का हमें एक एविडेंस देने के लिए हम लोग ये शॉर्ट टर्म स्टडी कर रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि जैसे 1 मंथ, बिकॉज इनका जो भी ट्रीटमेंट रहेगा अभी आईवीएफ जब तक चल रहा है उनका, या जो भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, तब तक ये लोग एनरोल हो रहेंगे उस स्टडी में। इनफैक्ट जब वो कंसीव होंगे उसके बाद भी ये ऑनगोइंग स्टडी रहेगा। लेकिन अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं, इट इज अ शॉर्ट टर्म स्टडी। वी आर जस्ट असेसिंग देयर साइकोलॉजिकल वेलबींग विद द राजयोगा मेडिटेशन इंटरवेंशन फॉर 1 मंथ। सो दिस इज ठीक है। जस्ट टू गिव देम एविडेंस। ठीक है, 1 मंथ तो ठीक आप है। कर ही रहे हो, ठीक है डॉक्टर शिवता बहन, वी एग्री विथ ठीक यू, है, बट ठीक वो है, ठीक। रिजल्ट मिलने तक
अगर जाएंगे ना तो दैट विल बी, हम लोग उसको कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं ना। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी हम लोग जो दिखाएंगे, इनफैक्ट वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट दिस इज अ ऑनगोइंग स्टडी एंड देन विल बी Okay. डूइंग इवन द लार्जर नंबर ऑन लार्जर नंबर ऑफ I पेशेंट्स. think Ma'am, I have think a suggestion, if I can, to make this study more productive and to get the accurate data. I think जो 4 weeks का study है, उसको हम WhatsApp group और जो इन पे join कर रहे हैं, उसको अगर थोड़ा follow up दे, that who all were there, who all joined या recording, वो थोड़ा follow up अगर रखेंगे उनका, हमारे जो sample होंगे, जो भी participant होंगे, तो उसका data accurate भी होगा और हमें पता भी चलेगा कि कितने yeah, लोगों ने ये ज्वाइन किया, कितना नहीं किया, तो कितना इफेक्ट आया. yeah, बिकॉज ये this 4 weeks की ड्यूरेशन है, शॉर्ट है. मैम पूनम मैम प्लीज जस्ट yeah, I add think on it. what in a way I actually agree with Dr. Srivastava is saying that you know, actually a valid study has to span much longer. It has to take into consideration compliance and dropout. But I think if we are submitting a paper to the ethics committee, we can say this is ongoing plan and we are planning to have the dropout data. We are planning to have live pregnancy. These are the variables and this data will be available after next year. But this is the preliminary data. Okay. That is what I think. Yeah. Then we Wonderful. If I may add one point, ma'am, I think whosoever is going to be the counselor and be in front of the couples or the ladies and the men, that person अगर आप उनको थोड़ा सा brief कर दो और थोड़ा ये जो हमारे जो the papers which we are taking, the question is, it will be easy for them. It will be really important for them to just scan the paper so that they are very comfortable doing it. yeah, Yes. right. तो Ma'am, what is the मैं sample size? मैं एक पॉइंट Sample और size. क्लेरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पर सर. Sir, yes, sir. Please go मैं ahead. एक पॉइंट और क्लेरिफाई ये करना चाहता हूँ कि ये जो आप ट्रेनिंग देंगे, ये ट्रेनिंग बस 1 ही महीने की दीजिएगा और आगे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर. बाकी बाद में करिएगा, लेकिन इनके ऑब्जर्वेशन आप लेते रहिएगा, सेकंड मंथ भी, थर्ड मंथ भी. Yeah. And I think that is part of the person who's tracking the subject, because see, there is too much at stake for the couple. They are वही spending तो. so much money, they are spending time. Some of the women have left their jobs just so that they can have a baby, which no doctor can guarantee on earth. If they may go wherever they want, USA, wherever, there's no guarantee. So somewhere this whole process has to be, the motivation has to be maintained. And personally, when I'm dealing with patients, believe me, honestly, when I see a woman who has had 2 failures, I am not able to motivate them. I feel myself, my God, what do I offer her next? She has spent money, she's crying. And even if she does the third one, मैं कोई guarantee तो दे ही नहीं रही. So I am at an ethical dilemma. Am I, so I'm just putting you my own predicament as a counselor. Ma'am, if I may add, I think that's where we'll have to try to have them connect with themselves in a different way. Because अगर पता है 2 cycles के बाद, so probably we'll have to really try to push them into different ways and see how we can help them. Because you being such a wonderful person, you feel the pain which they have, and you go on with them. Try to help to the extreme. There it comes now, because as we all know that the success rate for IVF is just 30 to 40%. So these almost 60 to 70% of the people will be having failure rate, and if they discontinue treatment because it may not be in the first cycle itself, they may require 2-3 cycles. That's why the psychological support is very, very important and it should come in the guideline. And मुकेश भाई साहब आप बोल रहे थे कि 1 month ही देना है, लेकिन उसके बाद उनको कंटिन्यू नहीं करना है. इनफैक्ट वील हैव टू कंटिन्यू विद देम, बिकॉज जैसे इट्स अ राज योगा लाइफस्टाइल, सो दे नीड टू नहीं, मतलब मैं केवल ये कह रहा था कि हम लोग को स्टडी के लिए एक मॉड्यूल बनाना है. देखिए जी,
उस मॉड्यूल में अगर हम 1 महीने की ट्रेनिंग रख करके देते हैं जी। और उस ट्रेनिंग के 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर हमने उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ले लिए, जो कि पोस्ट ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। Yeah, फिर आपके पास पेशेंट तो फॉलोअप में आएगा ही 1 महीने के बाद फिर से वो, yeah, ठीक है। उस पेशेंट से फिर आप उस दिन जो है एक आधा घंटा 1 घंटा लगा के फिर से एक बार उसके साइकोलॉजिकल का ले लीजिएगा। yeah. होता क्या है, दिस इज माय एक्सपीरियंस, कि जो इंट्रा जो ये होते हैं पेशेंट्स होते हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस में चेंजेस आने लगते हैं। आपने राजयोगा मेडिटेशन की इतनी चीजें सिखाई, उन्होंने, कुछ लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग उसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि इन लोग के जो आंसर्स होंगे, आंसर टू द क्वेश्चंस, दे मे वेरी। और हमको इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है जानना। The questionnaire are standardized. Yeah, their internal state, which is changing, will get reflected very accurately on the questionnaires. Yeah. To Ma'am, discover why their internal state, that is another dimension altogether. But picking up the internal state consistently there. और एक चीज ये होगी इसमें कि हमने सारे कैंडिडेट्स को केवल 1 ही महीने की ट्रेनिंग दी। देखिए, रिसर्च में जो है स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी होता है। हम 1 महीने की ट्रेनिंग दे करके ही केवल उसका इफेक्ट देख रहे हैं अभी। जी 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 सर, मैं एग्री कर रहा हूँ श्रीवास्तव सर से, क्योंकि यदि हम रिसर्च प्लान कर रहे हैं तो वही यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। 1 महीने की ट्रेनिंग का मतलब है 1 महीने की ट्रेनिंग सबको। अगर 1 घंटे का इंटरवेंशन है तो 1 घंटे का इंटरवेंशन सबको मिलना चाहिए डेली का। जो जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको बताना होगा हमें कि वाई दे ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टडी। और फॉलो अप में विदाउट इंटरवेंशन ऑल्सो, विदाउट गिविंग इंटरवेंशन वी कैन हैव फॉलो अप आफ्टर में से 1 मंथ। तो उससे ये पता चलेगा कि वेदर द ट्रीटमेंट गेन्स वर मेंटेन्ड और Yes, नॉट। exactly. Yeah. हाँ, ट्रीटमेंट एग्जैक्टली। गेन्स हो सकता है कि प्री और पोस्ट में काफी डिफरेंस हो और फॉलो अप में कम आ जाए डिफरेंस, क्योंकि और फैक्टर्स आ गए या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। या ये हो सकता है कि प्री एंड पोस्ट में भी वही डिफरेंस रहे और फॉलो अप में भी गेन्स मेंटेन रहे। This So has we been are our expecting that the well-being of these people will improve after the intervention, pre and post. Well-being, their health, and the levels of depression will come down. यस यस। Am I नहीं, right? इसमें Is it? यस, यू आर वेरी राइट डॉक्टर विकास। इसमें आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। जैसे कि हम लोग एक ओरल डोज लेते हैं और वो धीरे धीरे करके उसके जो है कंसंट्रेशन इन द ब्लड जो है डिम होता चला जाता है। जी 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 उसी तरीके से ये हमने एक डोज दे दी 1 महीने की इनको, और हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट कितने दिन तक लास्ट कर रहा है इनका। जी सर, जी सर। और उससे हमारा जो है ये इनका आउटकम कितने किससे रिलेट हो रहा है, राइट 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 ये सर। ये बहुत अच्छी फाइंडिंग निकल करके आएगी, हमको लग रहा है आएगी, जो भी हो, मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जी बट जी ये एक रियल इंफॉर्मेशन होगी साइंटिफिकली। राइट राइट सर। पूनम मैम, सैंपल साइज का कुछ एस्टिमेशन कितना है? आप इसमें कितने लोगों के ऊपर करेंगे? I think Dr. Srivastava has to guide on that sample. अच्छा अच्छा। Yeah. क्योंकि आई थिंक लार्ज सैंपल विल बी रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट्स। Yeah. Dr. तो Vikas, what we are looking at this as a pilot study Yeah. till December, and then once from the pilot study, then we'll take a proper study, and the long-term study, it will be a long-term study with the number also proper, whatever statistically significant. This will be a pilot study which will give us the basis of for the further study. Is that correct, Dr. Poonam? Yes, exactly. Otherwise, in as it is pilot study is a pilot study. Yeah. It is, we have to know that it is an indication. It is not the conclusion. So, Dr. Mukesh, for the pilot study, 50 patient in the control and the 50 patient in study should be, I think, it is accepted, no? दैट इज गुड इनफ Good enough. Okay. एज ए पायलट स्टडी, दिस इज गुड इनफ।
And for the ethical committee approval, Dr. Poonam, I'll have to talk to Dr. Shweta, whom I'll have to... I spoke here in the office. It's Dr. Sudha Prasad's office. Dr. Babita is there. I'll share her contact with you. She's dealing with all the ethical clearances. So once that is there, then I think all the IVF centers will also become more aware and more interested and participating is what. Right. Dr. Shubda, one thing, Yes. कि 50 complete cases, Okay. 50 complete studies. Yeah. Okay. Yes. Anything else, Dr. Poonam, you would like to add? No, yes. Thank you so much. So one was the ethical committee approval, and second, I wanted inputs from your side. You are already doing counseling from the the psychological point of view. So what I'll suggest, you have already written it to me on the WhatsApp, but you give us some input, so then we will reframe it. From the Raj Yoga meditation point of view, we'll prepare some affirmations for them. Right now, what affirmations we have created, it is for the process, for the IUI process and for the IVF process. But then we will create a few more affirmations, so it will be more useful for them. So you just give us the input, the way you are doing psychological counseling for them. Sure. Yeah. I'll share. I am following almost the ASHA guideline. Right. We can meet up. I can run you through, and then you can decide how to create the affirmations according to that way. Right. So Dr. Mukesh, I have to give you all the scales. So just to summarize, we are looking at 3 scales. One is the well-being, second is N2, and the third one is the PTI. PTI we are going to take now for the depression. Depression only Yeah, for so depression. these 3 scale I will forward it to him. The Okay. proforma also I'll forward it to Dr. Poonam, Dr. Vikas. So you go through that. The consent form I have already created that. And for the ethical committee approval, anything else if is required, then please let us know. I think that probably Dr. Babita will be able to. I'll share her link with you. I'll share her phone number and her email ID. So she is the one who's handling that entire process for the IFS. Every time you have to take the blood sample. That is to be mentioned in your study report. Proposal, sorry. In your study proposal, it should be mentioned, because ethical clearance give a lot of attention on this. Okay. Right. I think we Blood have to samples select patient as we have to keep certain inclusion criteria and exclusion criteria कि हम कौन से वाले infertility patient को लेंगे कि एज ग्रुप इतने से इतने हों जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुके हैं या फिर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो इस तरह हमको इंक्लूजन क्राइटेरिया भी बनाने पड़. Yes, ये वो प्रोफॉर्मा में जो डॉक्टर प्रोटोकॉल और मुकेश. प्रोफॉर्मा बनाया है Yes. उसमें है, तो वो प्रोटोकॉल और प्रोफॉर्मा भी मैं आपको भेज दूंगी. ऑलरेडी डन किया हुआ है ना. Yes, I have the documents I have received. It is already there in that inclusion exclusion Correct. criteria. बट स्टिल एक बार मैं डॉक्टर पूनम नायर को भी वो भेज दूंगी, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी वर्कड डन रिसर्च ऑन द इनफर्टिलिटी पेशेंट, सो देन वी विल गेट आइडिया. इवन डॉक्टर विकास विल बी एबल टू गाइड अस बिकॉज दे हैव डन ऑलरेडी डन द रिसर्च on this patient. So I'll forward it to them and we'll take inputs from them also. So maybe next meeting, can we decide the date right now? मुकेश भाई साहब, Yes. भाई नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? 1 week would be enough? भाई साहब आप बताइए, बिकॉज आप ही उसमें से यू गो थ्रू करेंगे और फिर आप इनपुट्स देंगे. बट आई थिंक बाय सितंबर एंड वी शुड स्टार्ट एनरोलिंग द पेशेंट. मेरे ख्याल से आप पेशेंट का एनरोलमेंट तो स्टार्ट कर दीजिए. नहीं, लेकिन फिर वो प्रोफॉर्मा clearance एक बार फाइनलाइज होना चाहिए ना, क्योंकि वो इंटरवेंशन आई मीन दी स्केल भी फाइनलाइज होनी चाहिए इसके लिए.
तो एक बार और फिर हमें इथिकल कमेटी क्लियरेंस भी लेना होगा ना। हाँ, वो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो 1 वीक में ये एक बार प्रोटोकॉल, प्रोफॉर्मा, साइकोलॉजिकल स्केल, कंसेंट फॉर्म, ये मोटे मोटे रूप में जो जो रिक्वायरमेंट है 1 वीक में हम फाइनलाइज करते। टुडे इज 14, सो आई थिंक बाय 20th वी शुड फाइनलाइज दिस, और हम लोग उनको सबमिट भी कर लेंगे। और ठीक है। अभी जो बना हुआ है एक बार भेज देते हैं। तो बाय 20, आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग, स्वामी भाई, इफ यू आर ओके ऑन 21st, नेक्स्ट थर्सडे, I think Dr. Poonam is But leaving for US on 20th September, and then she is not available till 30th October. So 19th को before मिल that, is it सकते क्या? possible? 19th आप जल्दी हो जाएगा। आप कैसे रहेंगे? आपका डॉक्टर पूनम विल बी वेरी बिजी क्योंकि I'll, back in I will be available online anyway for finalizing, and so that is not an issue. I'll be and available. regarding the PhD students and then recruiting patients, so we'll finalize the centers also, na, right now. So your center, we can take this as a part of a study, na, for the We, patient. yeah, I need consent from Ashim and Archika. If they are ready to start help in this, then Yeah, Ashima, Archika. where is they? Yes, ma'am, of course, we are with you Right here, ma'am, the right way here. you want. Okay, So that okay, thank means you. being at the center for some time every day. Is that practical, feasible? Yeah, let's work out the strategy as we are saying. If we are going to be going with single couple, or we are going to go with certain number of couples together, so that Yeah. should not be a problem. We'll Yes, make the study okay. happen together. We All of can us are a part of coordinate. team together. Yeah, Okay, fine. fine. So 2-3 centers I'm looking at, like Dr. Sunita has joined. She's from Karnataka, then Delhi, Bombay, New Bombay, and maybe in Nagpur. So 4-5 centers. So at least in 1 month we should be able to get 50 patients. Dr. Swati, you want to say something? No, ma'am, absolutely okay. Just you guide and we'll go through. ओके, सो भाई साहब, जस्ट टू सभी का एक इंट्रो कर देती हूँ। डॉक्टर स्वाति बाबा के बच्चे हैं, नागपुर से गायनेकोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर रीमा तो लखनऊ से ही है। शी इज KJMU में PSM डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। डॉक्टर सुनीता, शी इज IVF एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन कर्नाटका, हवेरी। और वैष्णवी तो PhD स्टूडेंट है, तो PhD। और बाकी डॉक्टर कृष्णा, शी इज सीनियर एनेस्थेटिस्ट फ्रॉम कोटा। तो डॉक्टर रीमा, डॉक्टर कृष्णा, ये जो 30 डेज का इंटरवेंशन होता है उसके काफी सारे सेशंस लेते हैं। और डॉक्टर रीमा है, PSM के प्रोफेसर है। और बाकी अशिमा, अर्चिका और अमिता, ये PhD, Purnima also is there. या एंड पूर्णिमा, And Dr. Vikas, of course, is ये सब मैडम के टीम से है। Dr. Amita's team actually. ओके ओके, More of her team. राइट राइट। Yes. तो आप मुझे थोड़ा उनका नंबर्स भी शेयर कर दीजिए, ताकि फिर sure. डॉक्टर विकास से भी हम इंटरेक्ट करेंगे। तो Yeah. एनी अदर इनपुट फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? डॉक्टर रीमा? I please excuse me. We are going for another meet now with the फाइन, consent. राइट राइट। Thank you so Thank you, much. thank you, Amita. Thank you so much, Dr. Thank Shobha. you, ma'am. I am really grateful to you for this work. Right. I am so. Thank you, ma'am. I cannot thank you enough. Thank you. स्वामी भाई, आप वोट ऑफ थैंक्स हमारी तरफ डॉक्टर से। रीमा कुछ बोलना चाहते थे? Thank you. हाँ नहीं, अभी स्वामी भाई पूछ रहे थे ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम ब्लड प्रेशर को मान लें, और इधर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं कुछ पेशेंट को, सपोज किसी ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट 1 दिया, फिर किसी को 2, किसी को 3, तो ट्रीटमेंट तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ब्लड प्रेशर वो कभी लो होगा कि ठीक होगा, तो वो डिपेंडेंट हो रहा है। तो इस तरह जो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, वो ट्रीटमेंट के ऊपर। तो इस तरह कई सारी रिसर्चेस, तो वो कुछ वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट, कुछ इंडिपेंडेंट, जैसे अभी डॉक्टर मुकेश ने बताया था ना। तो सर आप तो PhD करा ही रहे हैं। जी जी। और बाकी तो ये हम लोग मैं परफॉर्मा। ये अपने PhD स्टूडेंट्स है ना, उनके हिसाब से मैं बता रहा था हाँ कि जी उनको जी में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। यस, जी जी। चलो, Sir, in थैंक यू वेरी simple मच ऑल language, ऑफ we यू। say cause and effect. हाँ हाँ हाँ। अच्छा, In a simple language, we say cause and effect to understand easily. Independent is a cause and effect is dependent. थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सो वी थैंक यू ऑल ऑफ यू
Thanks, Dr. Dr. Anjali Mukesh has ji. joined, Swami Bhai. She is also clinical psychologist. हाँ. Yes, good evening, Om Shanti, brother and sister. I'm really sorry because I slept just after return back from the hospital. Just now I woke up. I was very tired, so I'm very sorry for this time. No issues. We have ठीक है, recorded this we will meeting. brief We'll here, just send you okay? the recording and we'll take inputs from you. Sure, sure. Thank you so much. चलो, bye bye, all of you. Bye. Good night. Om Thank Shanti. you. Om Shanti. Thank you so Right. much. Thank you, sir. Thank Bye. you, ma'am. Thank you. Thank Om you. Shanti. Thank you.